number 9. What is given in this question? The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. Okay, look this side. What is given in this figure? मैंने यहाँ पे इसका फिगर फॉर्म किया है. AB is the height of the building. We don't know what is the height of the building. We have to let it is h meter. And next, a tower CD whose height is 50 meter, which is given to you in this question. Then A C से D तक point कितना हो गया अपने पास में 50 meter. According to the question, what is given from the foot of the building? From the foot of the building at the top of the tower, angle of elevation कितना अपने पास में 60 degree. And next, from the foot of the tower at the top of the building, the angle of elevation is given as 30 degree. अब मेरी बात समझना इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, ठीक है? आपको कैसे पता चला कि सर टावर की हाइट एंड बिल्डिंग की हाइट दोनों को कैसे बिना कंपैरिजन के किए आपने कैसे बता दिया कि टावर की हाइट ज़्यादा है एज कंपेयर टू बिल्डिंग? मैंने देखो डायग्राम में भी टावर की हाइट ज़्यादा बनाई है एज कंपेयर टू बिल्डिंग. हाउ कैन यू राइट दिस? आपने फिगर में किस अकॉर्डिंग शो कर दिया वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. फ्रॉम दीज टू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, अगर आप बात करो बिल्डिंग एंड टावर दोनों की बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी ना. अगर मैं दोनों केस के लिए बात करूँ, यहाँ से अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द बिल्डिंग दोनों सेम रहेगी. द एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना बोला इसने? एट द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना है अपने पास 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे ज़्यादा बना? एट द टॉप ऑफ द टावर. दैट्स वाई द हाइट ऑफ द टावर इज मोर देन एज कंपेयर टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग की हाइट के कंपैरिजन में टावर की हाइट ज़्यादा है. क्लियर टू यू? From this angle of elevation we can calculate, where we can write, where we can draw the figure as the height of the tower is greater than as compared to height of the building. Okay, the height of the building as h meter and the distance between these two points are x meter. If you are writing the question, the solution of the question, then how can you write? First one, you can write the height of the tower CD as 50 meter. Next, AB is the height of the building, which is let as h meter, and the distance between these two points are x meter. Now the angle of elevation at the top of the tower is 60 degree and the angle of elevation from the foot of the tower is 30 degree. Okay, now how can you solve this question? We have to take two right angle triangles. हम लोगों को क्या लेना है? टू राइट एंगल ट्रायंगल लेना है. फर्स्ट वन, मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ? मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ BC एंड D वाला. ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज ये 90 डिग्री हो जाएगा अपने पास में. अगर पूरे के लिए बात करूँ तो BCD इज योर राइट एंगल ट्रायंगल. एंड इन ट्रायंगल BCD क्या होगा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सर यहाँ पे भी tan थीटा कैसे आया? बिकॉज वी नो द हाइट ऑफ द टावर, वी डोंट नो अबाउट आवर बेस, दैट्स वाई परपेंडिकुलर एंड बेस के बीच में रिलेशनशिप निकाला. देन tan द वैल्यू ऑफ थीटा. थीटा यहाँ पे क्या है? CBD. क्या मैं एंगल बेस एंगल ले सकता हूँ इसमें B? तो कैन आई राइट हियर tan एंगल CBD इज इक्वल टू व्हाट इज योर परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर अपने पास में CD एंड व्हाट इज योर बेस? BC. देन tan एंगल CBD कितना अपने पास में? 60 डिग्री विच इज इक्वल टू CD. C से D तक की हाइट कितनी अपने पास में? 50 अपॉन BC. BC की लेंथ कितनी अपने पास में? x. tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 सर. देन ये हो गया √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x. नहीं इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में. √3 शिफ्ट हुआ तो डिवाइड में. 50 अपॉन √3. कैन आई से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1? नो प्रॉब्लम. इन नेक्स्ट वी हैव टू टेक ट्रायंगल ABC. मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ? इन ट्रायंगल ABC. नाउ हियर again tan theta which is equals to perpendicular upon base. The value of theta here ACB angle ACB is equals to what is your perpendicular? Perpendicular AB है H AB and what is your base? BC is your base. Now यहाँ से कितना आ जाएगा? tan ACB. ACB की वैल्यू वहाँ पे देखो कितनी है अपने पास में? 30 डिग्री. एंड AB A to B इसकी हाइट कितनी है? H
एंड द बी टू सी कितना है अपने पास में x, क्या करूंगा इसकी वैल्यू प्लेस करूंगा, √3 1/√3 किसकी वैल्यू हो गई, tan 30 h upon x, what you have to do, cross multiply, x is equals to h √3. Can I say this is your equation number 2? From equation number 1 can I place the value of x in this case? Put x is equals to 50/√3 into equation number 2. जैसे इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस की x is equals to 50√3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50√3 is equals to h √3. Okay, the value of h कितना आ जाएगा, 50/√3 into √3, क्या आ जाएगा, 50/3 मीटर. The height of the building is 50/3 मीटर. अगर आपको x डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बिल्डिंग एंड टावर, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच के अगर मेरे को डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी होती तो h की वैल्यू कितनी है, 50/3. कैन आई प्लेस, ओके, ऑलरेडी x की वैल्यू तो कितनी आएगी, 50/3 थी. इज इट क्लियर टू यू? व्हेन यू डिवाइड 50/3 तो कितना आ जाएगा अपने पास में, तो भी वैल्यू आएगी, डेसिमल एक्सप्रेशन आप लोग प्लेस कर देना है यहाँ पे. Clear? Students, after question number 9, question number 10. What is given in this question? Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meters wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. Look this side. This is the particular condition. Here, in this diagram, AB is the height of the pole. The same height and another pole is having ED. This is also h meter. Now these two poles are standing opposite to each other. दोनों poles एक दूसरे के हैं opposite, and in between them वहाँ पे क्या एक road है. The width of the road BD, which is given as 80 meter. Okay. Now from a point in between these two poles, कोई भी इन दोनों poles के बीच में कोई point है. From this point, the angle of elevation at the top of the pole is 30 degree. एक pole पे तो angle of elevation कितना है, 30 degree. And from this same point, another pole पे कितना है angle of elevation, 60 degree. So you have to measure height of the poles and the distance of this point from these two poles. दोनों poles से जो distance है वो भी calculate करनी है, and we have to calculate height of the pole. How can you calculate? Look this side. For the particular question, solution is, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या क्या चीज बतानी होगी वो बता रहा हूं. यू कैन राइट AB is the height of the pole. AB and ED are the two poles opposite to each other having same height as h meter, and a point on the ground, the distance between these two poles are 80 meter, and a point in between them. From this point, the distance of one pole is x meter and another pole is 80 minus x meter. Clear? Now for the solution you can write right angle triangle. अपने पास right angle triangle की बात करता हूँ. Now ED, this is the height of the pole which is always perpendicular. The pole and the base always perpendicular to each other. This angle is 90 degree and this is also 90 degree. Now in triangle, first right angle triangle के अपने पास trigonometric ratio we are using. First right angle triangle A, B and C. In triangle A, B and C. Okay, this is AB. This is your perpendicular, and BC is your base. Perpendicular upon base, which is equals to tan theta. The value of theta here, if you are taking triangle, right angle triangle as A, B and C, this is your base angle. That's why this is your perpendicular and this is your base. Perpendicular क्या हो जाएगा अपने पास, h meter, and base as x meter. Now tan, the value of theta for the angle ACB. Angle ACB is equals to perpendicular. The perpendicular as AB and base as BC. Now tan angle ACB is 60 degree. This angle is 60 degree, which is equals to AB. AB having height as h and BC as x. Tan 60 √3 is equals to h upon x. X here in divide, shift another side in multiply.
x√3 is equals to h. The value of h is equals to क्या आ रहा है अपने पास x√3. Can I say this is your equation number 1? We are having here two variable. अपने पास में यहाँ पे कितने variables है? Two variable. Which one? h and x. तो value of h is equals to क्या आ गया? h x√3. In next condition, in next right angle triangle, in triangle CDE, again tan theta is equals to perpendicular upon base. The value of base here theta is 30 degree, base angle में 30 ले रहा हूँ. Now tan angle ECD is equals to perpendicular ED and base CD. Now tan ECD is 30 degree and angle ED की वैल्यू कितनी है अपने पास h and CD C2D the distance is 80 minus x. Clear? Now the value of tan 30 is 1 upon √3 is equals to h upon 80 minus x. What you have to do? Cross multiply these two terms. H 80 minus x is equals to h√3. Can I write h√3 is equals to 80 minus x? So this is your equation number 2. This is called equation number 2. From equation number 1, can I place the value of h in equation number 2? So put the value of h into equation number 2. H into equation number 2. When you place the value of h क्या है अपने पास में x√3, यहाँ पे क्या आ जाएगा x√3. Okay, as value of h and √3 in multiply, which is equals to 80 minus x. 80 minus x, x√3 into √3, 3x is equals to 80 minus x. x shift another side, then यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास 3x plus x is equals to 80, 4x is equals to 80, x is equals to 80 upon 4, कितना आ जाएगा 20 meter. Okay, the distance between B to C is, ये तो हो गया अपने पास 20 meter, and the remaining C to D distance from this point to another pole is 80 minus x. तो 80 minus x कितना है 80 minus 20 कितना हो जाएगा अपने पास 60 meter. Is it clear to you? Now B to C की distance आ गई अपने पास and C to D की distance calculate होगी. We have to calculate height of the pole. Height of the pole किस according calculate करेंगे? The value of x we know 20 meter. Can I place in equation number 1 as x, as the value of x? Put the value of x into equation number 1. तो यहाँ से h is equals to कितना होगा 20√3 meter. So what is the height of the pole in this particular case? H is equals to 20√3 and the distance of this point from one pole is 20 meter and from another pole is 60 meter. Clear to you? Okay. Students, after question number 10, question number 11. What is given in this question? A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point. On the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. Look this side. This is your diagram for the particular condition, and there in this question आपको figure भी given है 9.12. Okay, AB is the height of the tower. Okay, ये मैंने क्या ले लिया यहाँ पे tower. The height of this tower is h meter. ये मैंने क्या किया है let किया है the height as h meter from one bank another bank of a canal. BC is the width of the canal. From the one bank of the canal, the angle of elevation at the top of the tower is 60 degree, and this is the width of the road, that is 20 meter,
and at the corner from the road, the angle of elevation at the top of the tower is 30 degree. What you have to calculate? You have to calculate the height of the tower and distance of these 2 points, mean the width of the canal. ये आपको दोनों चीज कैलकुलेट करनी है. You know this is the height of the tower always perpendicular with the horizontal ground. आपका horizontal ground के साथ में हमेशा क्या रहेगा? 90 degree. Okay? How can you solve in this question? First of all, you have to mention all the things when you are solving this question. AB is the height of the tower and BC is the width of the canal, which is x meter, let as x meter, and the height is also let as h meter, and CD is the distance from between these 2 points. The angle of elevation is one is 60 degree and from another point is 30 degree at the top of the tower, and the distance is 20 meter. How can you solve? In triangle ABC, we are having two right angle triangle ABC and another one is ABD. These two right angle triangle we are having in triangle ABC. In right angle triangle ABC, AB is the perpendicular and BC is your base, then perpendicular upon base by using trigonometric ratios. Pandit Badri Prasad Harar बोले सोना चांदी तोले. Perpendicular upon base क्या होता है सर? tan theta. So tan theta equals to perpendicular upon base. The value of theta you know very well, which is 60 degree. तो पहले मैं इसमें एंगल ले लूं ACB. This is your angle which is equals to perpendicular. Perpendicular कितना आ जाएगा अपने पास में AB and upon base कितना अपने पास BC. The value of AB A to B which is h meter and BC B to C कितना अपने पास x, and tan angle ACB, the value of angle ACB is 60 degree. So place here tan 60 degree. Now the value of tan 60 root 3 is equals to h upon x. Now the value of h x root 3. Can I say this is your equation number 1? H is equals to x root 3. Clear? Now in triangle, in another right angle triangle, triangle ABD. Triangle ABD. B is 90 degree and that is your base angle. So tan theta, again I am placing tan theta perpendicular upon base, because we know we have to make relationship between perpendicular and base. So tan, the value of theta कितना अपने पास यहाँ पे 30, but for angle ADB you can also mention like this tan D and here tan C, which is equals to AB. AB is AB and perpendicular BD. Now tan angle ADB इसकी वैल्यू कितनी है 30 डिग्री is equals to h upon 20 plus x. Now the value of tan 30 1 upon root 3 is equals to h upon 20 plus x. Now you have to cross multiply these two terms. So 20 plus x is equals to h root 3. Can I say this is your equation number 2? From equation number 1, can I place the value of h into equation number 2? So put the value of h from equation number 1 into equation number 2. Equation number 2 में जैसे ही मैंने इसको प्लेस किया तो कितना हो जाएगा 20 plus x is equals to the value of h x root 3 प्लेस किया x root 3 multiply by root 3. when you multiply root 3 and root 3 कितना आएगा अपने पास 3. now यहाँ से आ गया 3x 20 plus x. now x shift another side, then 20 is equals to 3x minus x. 3x subtracted by x, then क्या आ जाएगा अपने पास में 2x is equals to 20. the value of x 20 upon 2. so ये क्या कैलकुलेट हो गया आएगा x is equals to 10 meter. so what is the x? x we let as BC. BC क्या था? width of the canal. तो कैनाल की width कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगा BC as x which is equals to 10 meter. the width of the canal कितनी आ रही है? 10 meter. and the height of the tower as AB
ये तो हो गई विड्थ, ओके, और ये क्या आ जाएगी अपने पास में, हाइट ऑफ टावर। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ए बी, द वैल्यू ऑफ ए बी, ए टू बी क्या है अपने पास में, एच, वी नो एच इज इक्वल्स टू x root 3, the value of x 10 root 3 meter. I think this process is clear to you. Students, after question number 11, in question number 12, what is given in this question? From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. Look this side, all of you. This is the figure for the particular situation. AB is a 7-meter high building. AB is a 7-meter high building. As observer, I am at the top and I am looking at the top of a cable tower. The angle of elevation means the height of cable tower as compared to the building is more than, because from the top of the building as an observer I have to look. Angle of elevation means upward, मेरे को देखना पड़ रहा है. That angle of elevation कितना अपने पास में, 60 degree. Okay. From this same point at the foot of the cable tower, the angle of depression is made as 45 degree. यहाँ पे कितना बन रहा है अपने पास, 45 degree का angle of depression बन रहा है. So AB is the height of the building as 7 meters. CE is the height of the cable tower, which is first for AB के लिए जो डिस्टेंस है वो कितने हो जाएगी, 7. तो अगर मैंने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया तो ABCD एज ए रेक्टेंगल वर्क करेगा एंड AB एंड CD बोथ आर इक्वल. तो ये 7 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर. एंड द रिमेनिंग हाइट ऑफ दिस केबल टावर ED एज H meter. In solution, how can you mention all the things? First, write down AB is the height of the building as 7 meter. Now, EC is the height of the cable tower, which is 7 plus H meter. Now, from the point A, the angle of elevation at the top of the cable tower is 60 degree and angle of depression at the foot of the cable tower is 45 degree. The distance between building and cable tower let as x meter. इस लेंथ को मैंने क्या लेट कर लिया, x meter. So how can you solve this problem? Look this side. We have to take two right angle triangle. हमें क्या लेना है, two right angle triangle. So ATE is a right angle triangle. Next ACD is also an right angle triangle. ABC is also an right angle triangle. So आप कोई सा भी एक right angle choose कर सकते हो. So this one and this one. I am taking two right angle triangle ADE. This is 60 degree. The length AD as x meter. This angle is 45. So can I say this is also 45 because these two lines are parallel to each other and AC is your transversal line. That's why these two angles are equals to each other. अगर ये x meter है तो ये भी कितना हो जाएगा, x meter. Now in triangle, right angle triangle ABC, in triangle ABC, you know perpendicular upon base, which is equals to tan theta, because we have to make the relationship between perpendicular means height and distance के बीच में relationship generally हमारे पास questions में होता है. That's why ये जो perpendicular है ये क्या हो गया आपके लिए base. So in triangle ABC, what is the perpendicular? In this case AB is your perpendicular and BC is your base. So tan base angle ACB is equals to perpendicular. AB is your perpendicular and BC is your base. Now tan angle ACB, the value as 45 degree is equals to AB कितना अपने पास 7 meter and BC which is x meter. So tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, which is equals to 7 upon x. The value of x is equals to 7 meter. Any problem? This is your equation number 1. The value of x, the distance between the cable tower and the building is 7 meter. After this, in right angle, another right angle triangle, in triangle ADE, बेटा देखना एक बार, थोड़ा समझना क्या है इसमें. ED is the remaining height of the cable tower and AD is the distance between these two points, means these two buildings. ये कितना है x 7 meter, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 meter. Before this we have to take the relationship between
tan थीटा, tan थीटा में अपने पास में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, द वैल्यू ऑफ थीटा इज एंगल EAD, एंगल EAD is equals to perpendicular ED and base, what is your base, AD, clear, perpendicular हो गया अपने पास ED and AD is your base. Now tan for the angle EAD कितना अपने पास 60 डिग्री, आप सीधा चाहो तो एंगल A एंड एंगल C इन दोनों में मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल 60 डिग्री, AD E to D डिस्टेंस है, हाइट एज h एंड द डिस्टेंस इज x, tan 60 कितना होता है, tan 60 is √3 which is equals to h upon x, so the value of h is equals to x √3, the value of h कितना आ गया, x √3, this is your equation number 2. देखो मैंने आपको हर बार बोला है कि जनरली इफ वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ वेरिएबल, अगर अपने पास दो अलग अलग वेरिएबल हैं देन वी हैव टू इक्वेशंस, टू इक्वेशन कौन सी, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी, फ्रॉम दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 7, दो यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम equation number 1 into equation number 2. When you place the value of x7 into equation number 2, h is equals to 7√3 meter. So can I say height of the h क्या था, height of the cable tower, so h कितना आ जाएगा 7√3. Can I say this is correct? No, it's wrong, because height of the cable tower C to E, entire height की बात कर रहा हूं मैं, हाइट ऑफ केबल टावर, तो केबल टावर की जो हाइट होगी, हाउ कैन यू मेजर दिस हाइट, C to E, CE which is equals to CD plus DE. Okay, now the value of CD, C to D कितना अपने पास 7 मीटर, and ED, E to D कितना अपने पास h, then 7 plus the value of h कितना अपने पास में 7√3. ओके, व्हाट इज द कॉमन इन दीज टू टर्म, दोनों में अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन 7 अंदर रह जाएगा, √3 plus 1 मीटर. द हाइट ऑफ, एंटायर हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7 into √3 plus 1 मीटर. क्लियर, तो हाइट, एंटायर हाइट ऑफ द केबल टावर कितनी आ गई, 7√3 plus 1 मीटर. ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स मींस बिल्डिंग एंड केबल टावर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी अपने पास में, 7 मीटर. ओके.